of life-saving food and medical assistance, restore humanitarian supply lines, and prevent famine conditions from taking hold. Third, renewed and reinforced international support to UNRWA, which remains indispensable to the survival of millions of Palestinians. Fourth, an end to the forced displacement, illegal settlement expansion, and annexation of Palestinian land, particularly in the West Bank and East Jerusalem. Fifth, implementation of the Arab and OIC-led reconstruction plan for Gaza, which represents a vital framework for post-conflict recovery and rehabilitation, sustainable development, and the restoration of dignity for the Palestinian people. And sixth and last, a political horizon is the need of the hour, the revival of a genuine and time-bound political process to achieve a just, comprehensive, and lasting two-state solution in accordance with international law and relevant UN resolutions. Pakistan welcomes the growing international momentum in support of the Palestinian statehood and full membership of the UN. We urge those that have yet to recognize the state of Palestine to do so as soon as they can. We also welcome the convening on 28th of July of the International Conference on the Two-State Solution, co-chaired by Saudi Arabia and France, to help generate renewed momentum and take concrete actions towards achieving the two-state solution. Excellencies, a comprehensive and enduring peace in the Middle East requires addressing all interrelated crises across the region through effective multilateralism and peaceful settlement of disputes. Pakistan supports the stabilization of Syria through an inclusive political process. Syria's unity, sovereignty, and territorial integrity must be upheld. Israel must withdraw immediately from the separation zone established under the 1974 disengagement agreement and from the occupied Syrian Golan Heights in accordance with Security Council resolutions 242, 338, and 497. In Lebanon, the ceasefire understanding and resolution 1701 must be respected and the sovereignty and territorial integrity of Lebanon safeguarded. We must support the peace process in Yemen, facilitated by the UN and regional actors, particularly Saudi Arabia and Oman. The sharp rise in tension and violence as a result of Israeli aggression and unlawful military strikes in Iran was profoundly disturbing. These attacks set a dangerous precedent and pose grave threat to regional and global peace. Pakistan calls for urgent recourse to dialogue and diplomacy consistent with the UN Charter to find a peaceful and lasting resolution to this issue in accordance with the rights, obligations, and responsibilities of all parties. Excellencies, history has taught us that the use of force and unilateral military actions only deepen conflicts and entrench divisions with tragic human and humanitarian consequences. The way forward lies in upholding international law, ending foreign occupation, rejecting the use of force, and promoting solutions through dialogue and diplomacy. It is time to give the Palestinian people what they have been denied for too long: justice, freedom, dignity, and a state of their own. That is the path to durable peace and stability in the Middle East. I thank you all. पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसले फ़लस्तीन पर मुबाहिसे में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ़राहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी दो रियासती हल मसले फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की भी हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता और फ़लस्तीन पर मुबाहिसे की सदारत करना खुशाइंद है। ये कहना था वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का। अभी शामिल करेंगे जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है वज़ीर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाहराह कराक्रम, नारायण बाबू से चिलास शाहराह पर बहाली का काम तेज किया जाए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम इंतहाई जरूरी हैं। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाम भाग अफराद के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, मानसेरा, बटग्राम, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान में बारिश का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, नारोवाल, हाफिजाबाद